Okay, hello friends. Good morning, good afternoon, and good evening. We'll be discussing the questions of economy OCS 2020. Okay, so this is brought to you by Synapse IS and presented by me. There are various courses available for civil service examination, preliminary test and discussion, mains test evaluation and discussion, free interview guidance program. For all these courses, you can reach out to us to the WhatsApp number, and you can email us, and we will get back to you. Okay. So let us begin our session. OCS 2020 preliminary question. Those questions were actually conceptual questions, and you need to know basics of economy, certain important concepts in economy. Economy रे जेतिकी basic concept अच्छी, से concept जानिया को पड़िबो. कहीं कि ना क्वेश्चन सेमती आसुची जेतिकी हाई टॉपिक अच्छी इकोनॉमी रे. सपोज यू कैन से मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, then your human development, balance of payment, all these topics are important, and you have to go through all these topics because frequently a topic ro question repeat hochi. Okay, we will see how many important questions we can solve, and we will also discuss the related concepts, and if any future MCQs can be possible on the topic. Jodi kichi future MCQs topic re possible, we will also discuss that. Okay, see question number 1. Question number 1 says that question number 1 says, for each country global hunger index values are determined by which of the following indicators. Okay, so basically question pacharchi ki about global hunger index. Global hunger index ro indicator kon achi, thik achi. Global hunger index indicator kon achi, we will see first, then we will go to the question. See, this is the global hunger index. Okay, global hunger index ro तीनटा डायमेंशन अच्छी. फर्स्ट डायमेंशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज योर चाइल्ड मोर्टालिटी. सेकेंड डायमेंशन इज inadequate food supply. Third dimension is child under nutrition. Okay, all these three dimensions are there in the global hunger index, and there are 4 indicators. Okay, कौन indicator अच्छी? Child mortality रे we are taking U5MR, under 5 mortality rate. Okay, under 5 mortality rate आमे नौचे. अंडर 5 मोर्टालिटी रेट माने होची कोन जे लेस देन 5 ईयर चाइल्ड केते डेथ होचंती. ठीक अछि, दैट इज अंडर 5 मोर्टालिटी रेट. देन इनएडिक्वेट फूड सप्लाई. इनएडिक्वेट फूड सप्लाई रे हमें नोचे अंडर नरिशमेंट. सी एट लिखा है अंडर नरिशमेंट. ओके, देन चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, से तरह हमें नोचे वेस्टिंग एंड स्टंटिंग. वेस्टिंग माने कोन, स्टंटिंग माने कोन. वेस्टिंग माने सपोज गोटे नॉर्मल चाइल्ड रो हेल्थ एतिक रहया कथा. ठीक अछि, जदि चाइल्ड एमती ही गला ताले दिस इज वेस्टिंग. ठीक अच्छे. स्टंटिंग माने सपोज नॉर्मल चाइल्ड रो हाइट एतिक रहया कथा, जदि हाइट कमी गला ताले दैट इज स्टंटिंग. ठीक अच्छे. तो वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट एंड अंडर नरिशमेंट, ऑल दीज आर included in the global hunger index. Let us get back to the question again. See, undernourishment, yes. Child mortality, yes. Stunting, wasting, yes. Okay, so answer will be 1, 2, 3 and 4. Okay, okay. Next question. The reserve held by commercial banks over and above the statutory minimum with RBI is called as. Okay, various reserves, cash reserve ratio, your statutory liquidity ratio, all these are high MCQs for the examination, so you need to know. And question pacharchi je the reserve held by banks over and above the statutory minimum requirement. Okay, so that will be the answer will be excess reserve. See, what is excess reserve? We will see. Excess reserve is the reserve held by commercial banks over and above the statutory minimum ratio. Okay, excess reserves are the capital reserves held by a bank or financial institution in excess of what is required by the regulator, creditor or internal control. Suppose RBI अच्छी, RBI कंट्रोल करूची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को. ठीक अच्छी, स्टेट बैंक ऑफ RBI रो किसी गाइडलाइन अच्छी जे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विल कीप विथ इटसेल्फ. ओके, एतिकी मिनिमम तांको रखिवार अच्छी. ठीक अच्छी, जदि ताठू अधिका किसी रहिला SBI packere, that is called as excess reserve. Simple. ठीक अच्छी. So
एटी क्वेश्चन पचारछि रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एसबीआई यूबीआई ऑल दिस आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ठीक अछि तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रु एबव जति से माने रखुछन्ते दैट इज द excess reserve. Okay, so you have to remember this, and your task for you, go and read what is your cash reserve ratio, what is your statutory liquidity ratio, okay, what is repo, what is reverse repo, all these things you have to remember. Okay, okay, okay. So next we will move to question number next question, that which of the following promoted the concept of self help group for financial sector? Very very important question, the concept of self help group. Okay, the concept of self help group was first promoted by, you can say, NABARD. Okay, NABARD full form you know, it was established in 1982 and it developed the model of self-help group and bank linkage program. SHG and bank linkage program was developed by NABARD. NABARD developed करथिला self-help group and bank linkage program. Answer will be C, NABARD. Okay. Next, which of the following is not a financial inclusion scheme? Very very important question, simple question. Financial inclusion is very important topic for the examination by financial inclusion is very important, repeatedly question आछि ठीक अछि. ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुरक्षा बंधन स्कीम, अटल पेंशन योजना एंड हृदय. सी हृदय, you know, it is a scheme to promote tourism. Okay, hृदय is a scheme to promote tourism. Okay, government has identified various tourist places and government is promoting them to the scheme hृदय. Okay, see this. Hridaya full form is Heritage City Development and Augmentation Yojana. Heritage City Development and Augmentation Yojana by question Ministry of Urban Development. Okay, 12 heritage cities are going to be developed under Hridaya. So what are these cities? Amritsar, Mathura, Ajmer in Rajasthan, Banarasi in UP, Gaya in Bihar, am Odisha re Puri अछि, Telangana re Warangal, Karnataka re Badami, Andhra Pradesh Amravati, Tamil Nadu Kanchipuram, and Tamil Nadu Belakanni, then Gujarat Dwarka. All these cities are going to be developed by the Hridaya Yojana. Okay, okay. So how we will develop those cities? आमे city गुड़ा केमती develop करिया? We will develop those cities by the physical infrastructure. Physical infrastructure जहाँ भी city में required, we will provide that. Institutional infrastructure, economic infrastructure and social infrastructure. ठीक अछि? Any institutions, then physical infrastructure, economic infrastructure and social infrastructure. All these things will be provided through the Hridaya Yojana. Okay, let's get back to the question again. So the Hridaya scheme is not a financial inclusion scheme. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Suraksha Bandhan, Atal Pension, all these are financial inclusion scheme. Answer will be D. Okay, okay. Next question. Sishu, Kishore, Tarun are the schemes of. Okay, directly question from the schemes. Okay, scheme each year they are putting 2 to 3 questions, so very important for preliminary. So Sishu, Kishore, Tarun are the schemes of Micro Unit Development and Refinance Agency Limited. Okay, Mudra. See, तुम जानिछो, you know that there is a scheme called as Pradhan Mantri Mudra Yojana. Okay, Pradhan Mantri Mudra Yojana ro tagline कोन? Fund the unfunded by giving institutionalized collateral free loans. Okay, सेमानकु लोन दिया हो, सेमानकु किछि जमी घर किछि बंधक रखा होबनी, collateral किछि नाही, no collateral. Okay, so collateral free loans. Okay, so benefits employment to 1 crore people, provide banking services, then 3-tier loan structure. is Sishu, Kishore, Tarun 3-tier loan structure अछि. Sishu loan up to 50,000, Kishore loan up to 50,000 to 5 lakhs, and Tarun loan between 5 lakh and 10 lakhs. Okay, for business expansion. Okay, so this is the answer that Sishu, Kishore, Tarun are the categories of Pradhan Mantri Mudra Yojana. Okay, okay. So this is the Mudra full form, Micro Unit Development and Refinance. Okay, okay.
Okay, so answer will be B. Then we will move to the next question. Which of the following indicators is not used to calculate Human Development Index? HDI, very very important. Okay, Human Development Index. We will see. Option A hochi education, option B per capita income, option B per capita income, option C life expectancy, option D social inequality. Human Development Index देखो, Human Development Index ର dimension कौन कौन ଅଛି? The dimensions of Human Development Index: long healthy life, knowledge and standard of living. Three dimensions: long healthy life, long knowledge and standard of living. Okay, so long healthy life under कौन कौन सी? Life expectancy at birth. Okay, knowledge under कौन आछि? Expected years of schooling and mean year of schooling. Okay, that is called as education index. Dita education component अछि, that is called as education index. Then life expectancy at birth, that is called as life expectancy index. Then standard of living ame केमती measure करछे? Standard of living we are measuring by GNI per capita. GNI gross national GNI per capita in purchasing power parity. Purchasing power parity रे आमे जदि GNI per capita income को adjust करिकी नौचे, that is called as GNI index. Remember एटा भी क्वेश्चन आसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे जो इनकम कैलकुलेशन होउची सेटा केमती होउची, whether it is GDP, whether it is GNP, or whether it is in rupee or in dollar or in question आसे, so that you should answer that it is GNI per capita, it is not GDP per capita. ठीक अछि, it is GNI per capita, very very important. Okay, it is also a question, you can also expect that question in future, that it is GNI per capita, that is known as GNI index. Okay, okay, so all these things are there in the Human Development Index. Okay, okay, so let's get back to the question. Education is there, per capita income is there, life expectancy is there, but social inequality is not there. Human Development Index रे आमे देखिले education अछि, life expectancy अछि, education और knowledge अछि, standard of living अछि, ठीक अछि, per capita income भी अछि. So social inequality is not there. Answer will be D. Okay, okay, next आ गोटे इंपोर्टेंट जिस मन रखा पड़े, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. क्वेश्चन आसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स र तीनटा डायमेंशन अछि, गोटे होची रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आ गोटे होची एम्पावरमेंट, आ गोटे होची लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे हमें मैटरनल मोर्टालिटी रोचे, एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट नौचे, एम्पावरमेंट रे पार्लियामेंट रे वुमेन मानकर केते रिप्रेजेंटेशन अछि आमे सेटा नौचे, एजुकेशन अटेनमेंट केते सेकेंडरी एबव लेवल रे से माने केते एजुकेशन द वुमेन हैव गॉट. नेक्स्ट इंडेक्स होचे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जेति की काम लेबर फोर्स कंप्लीट लेबर फोर्स अछंती सेतु वुमेन केते अछंती. ठीक अछि, सो दैट इज द डायमेंशंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. This can also be an expected question. जदि SDI पचारला ताले जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी पचारि परियो. Who जदि following are components of gender inequality index? Reproductive health, women empowerment, labor force participation. Okay, okay. So next question. Which of the following committees recommended a poverty line based on nutritional requirements exclusively? Very very important. Poverty estimation and the committees. Okay, poverty estimation be important, and committees are very very important. Committees. Okay, which of the following committees recommended a poverty line based on nutritional requirement? Lakadwala committee, Rangarajan committee, Alga committee, Tendulkar committee. Okay, next I will show a slide and you can know that what are the important committees and what are their recommendations. Okay, just let me make it small. Okay, okay, see, I mean mainly we will see 4 committees. One committee is YK Alga committee, another is Lakadwala committee, another is Tendulkar committee, another is Rangarajan committee. Okay, see, YK Alga committee was set up in 1977. 1977 ने YK Alga committee set up होइतला.
poverty estimate करिया पे YK अलगा कमिटी recommendation कौन थला YK अलगा कमिटी recommended the poverty line okay YK अलगा कमिटी recommended the poverty line to the food intake recommend link the poverty line to the food intake okay ता माने YK अलगा कमिटी कहिले कि रूरल एरिया रे जदि गोटे लोक 2400 किलो कैलोरी एनर्जी और 2400 किलो कैलोरी रो फूड कंज्यूम करूची ठीक अछि 2400 किलो कैलोरी एनर्जी पाउची ताहले से पुअर नुह अर्बन एरिया रे जदि जणे 2100 किलो कैलोरी फूड पाउची ताहले से भी पुअर नुह ठीक अछि अलगा कमेंट कहले ठीक अछि ओके आमे लिंक करबा विथ द कैलोरी इनटेक ओके नेक्स्ट बट डिसएडवांटेज अछि कि आमे होल इंडिया रे सेम कैलोरी नहीं चली पारिबनी कहीं सब स्टेट रे अलग अलग फूड पैटर्न अच्छे सब स्टेट रे अलग अलग पॉपुलेशन अच्छा इनकम भी अलग अलग अच्छे सो वी कैन नॉट टेक सेम लिमिट फॉर एवरी स्टेट ओके सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वाईके अलगा कमिटी वाईके अलगा कमिटी डिसएडवांटेज यह थिला कि दैट वाज यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया इट वाज नॉट स्टेट स्पेसिफिक तो हम क्रिटिसिज्म कराला लोक गाली गले तो गवर्नमेंट कौन कला तापरे नेक्स्ट लकड़ वाला कमिटी सेटअप कला इट वाज इन 1989 लकड़ वाला कमिटी वाज सेटअप इन 1989 एंड लकड़ वाला कमिटी कौन कला से देखिला कि नहीं वाईके अलगा कमिटी होल इंडिया पे गोटे ही पॉवर्टी लाइन नहीं चंती तो लकड़ वाला कमिटी कौन कला चालाक रे कौन कले से माने कौन कले सेपरेट कर देले नेशनल पॉवर्टी लाइन इनटू स्टेट स्पेसिफिक वंस प्रति स्टेट पे अलग अलग से माने कर देले पॉवर्टी लाइन से कले तो एइथ तो प्रोब्लेम होची हमें सेटा को प्रति स्टेट वाइज सेपरेट कर दरा तो से माने तो प्रति स्टेट वाइज सेपरेट कर देले आ से माने अधिक किसी कले नहीं ठीक अछि त माने से माने सेही कैलोरी बेस्ड एरिया को कैलोरी बेस्ड रिक्वायरमेंट रखिले पॉवर्टी लाइन पे बट दैट वाज सेपरेटेड स्टेट वाइज ओके ठीक अछि तो नेक्स्ट 2005 रे गवर्नमेंट आउट कमिटी सेटअप कला दैट इज नोन एज तेंदुलकर कमिटी सचिन तेंदुलकर कमिटी नो नॉट सचिन तेंदुलकर इट इज सुरेश तेंदुलकर ठीक अछि तो सुरेश तेंदुलकर कमिटी वाज सेट अप इन 2005 सुरेश तेंदुलकर कमिटी डू वन एक्सीलेंट थिंग कौन कले डिड एन एक्सीलेंट थिंग that it shifted away from calorie based model जो calorie based model थिला it shifted away from calorie based model से कहले नहीं कैलोरी बंद करो कैलोरी दरकार नहीं जे लोक को खाली कैलोरी खाउछन लोकंकर एजुकेशन भी अछि लोकंकर एंटरटेनमेंट भी अछि लोकंकर ट्रांसपोर्ट भी अछि हेल्थ अछि सबुरे एक्सपेंडिचर होछि तण आमे खाली कैलोरी एक्सपेंडिचर नै कि पॉवर्टी एस्टिमेशन करि परिबा नाही सो तेंदुलकर कमिटी डिसाइडेड दैट we will take monthly per capita expenditure ता माने गोटे मंथ रे जणे केते एक्सपेंडिचर करूची हमें सेटा को नेकी पॉवर्टी कैलकुलेशन करिबा ठीक अछि ओके तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रे तेंदुलकर कमिटी डिसाइड करले कि रूरल एरिया रे जे 816 टंका अर्न करूची सीए पुअर नुह अर्बन एरिया जे 1000 टंका मासु को अर्न करूची सीए भी पुअर नुह ठीक अछि दिस वाज द recommendation of Tendulkar committee then again Rangarajan committee was set up in 2013 and Rangarajan committee कहले कि नाही आमे ओटा काम करिया जणे जणे जदी एक्सपेंडिचर करूचंती ताहाले आमे सेटा अधिक आइ जिवो आमे ओटा कोन करिया पांच जणा फैमिली नै जिवा आ समस्त एक्सपेंडिचर मिसे दबा मिसे कि आमे डिसाइड करबा कि पॉवर्टी का की केते पुअर इनकम केते रहउची आमे लिमिट तयारी करबा तो सी कोन कले मंथली एक्सपेंडिचर फॉर ए फैमिली ऑफ 5 पांच जणिया परिवार रा मंथली एक्सपेंडिचर नै कि से पॉवर्टी लाइन डिसाइड कले तो पांच जणिया परिवार से रिकमेंड कले कि रूरल एरिया जे 4860 टंका रोजगार करूची पांच जणिया परिवार जदी गोटे रूरल एरिया रे 4860 टंका रोजगार करूची सी पुअर नुह जदी जण अर्बन एरिया रे 7035 टंका रोजगार करूची ताहाले सी पुअर नुह ता तळु जे रोजगार करूची से पुअर ठीक अछि तो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑल द इंपोर्टेंट पॉवर्टी estimation committees very important for the preliminary examination even UPSC रे भी क्वेश्चन आछि so remember this okay so हमर क्वेश्चन कोन थला which of the following committee recommended poverty line based on nutritional requirement exclusively now you can answer that is sorry that is YK alga committee okay YK alga committee okay so we will move to the next question okay oh good afternoon everyone okay so Susri Dipti Priyanka good afternoon everyone okay so next question the first sustainable development goal
the fast sustainable development goal aims to eradicate extreme poverty. How does the UN currently measures extreme poverty? UN ର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମେସନ୍ର। ୟୁଏନ୍ ୟୁଏନ୍ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଲକୁଲେଟ୍ କରେ ସେଇଟା। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟିର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅପସନ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, this will be $1.25 per day। ओके ओके ठीक अच्छे, आम देखा सी वेरी गुड इनफॉरमेशन, फ्यूचर रे एमसीक्यू आसी पारे। इन 2015 वर्ल्ड बैंक अपग्रेडेड इट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन बाय इंक्रीजिंग द इनकम रिक्वायरमेंट्स। एज पर द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट पॉवर्टी मेजरमेंट मेथोडोलॉजी, द इंटरनेशनल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन इज US $1.90। तामाने जहाँ क्वेश्चन पड़े सेटा भी आउ नाही, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड टुडे। ओके, वर्तमान एक्सट्रीम पॉवर्टी होची $1.90। जो माने $1.90 रो तळु को रोजगार करछंती डेली, से माने होचंती एक्सट्रीम पुअर, दे आर एक्सट्रीम पुअर। ओके ओके, सो एंड previously this extreme poverty line was earning $1.25। ओके, आगुर थिला $1.25, वर्तमान सेटा $1.90 रहिछि। एटा भी सेप्टेम्बर पर आ रहइबो, सेप्टेम्बर पर पुन नुआ पळे आसियो। कोन नुआ पळे आसियो? रिमेंबर, फ्रॉम September 23 World Bank will adopt a new poverty line based on $2.15 per day base year 2017। question, potential question for future exam, potential question। सेप्टेम्बर परे वर्ल्ड बैंक रो इंटरनेशनल पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन टा $2.15 पर डे हेई जिवो। ठीक अछि, रिमेंबर दिस। ओके, सो आउ ए क्वेश्चन सॉल्व करे के दरकार नै, यू रिमेंबर तीनटा फैक्ट मन रखिलो। आगुर थिला $1.25, एबे करेंटली इट इज $1.90। ओके, तो $1.25 टा थिला 2005 रो बेस प्राइस थिला, बेस ईयर थिला तारा, and $1.90 2011 was the base year, but the $2.15 jota haba per day income September ru, the base year will be 2017। okay, this is the potential question for future exam। which of the next question, which is the highest allocation ministry in budget 2021-22? see, always defense is the highest defense is getting highest allocation। see, eta hochi 2021 ro budget, 2021 budget re see defense is highest 47,478,196 crore। ओके, एथर 2022 बजेट रे भी सेम, 2022 बजेट रे भी सेम, इट इज डिफेंस अगेन 525.2 thousand crore। ओके ओके, सो आंसर विल बी डिफेंस। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड ए न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विथ डैश एज द बेस ईयर। CPI IW फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर केते, सेटा ही क्वेश्चन पचारछि। सी, read this, recently Ministry of Labor and Employment released a new series of consumer price index of industrial workers CPI IW as the base year is 2016। answer will be this 2016। okay, अच्छा, तो जदि CPI IW बेस ईयर 2016 हिला, तो CPI IW रो काम कोन? व्हाट इज CPI IW रो काम कोन? CPI IW इज मेनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस, DA जो दिया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानन को, दैट इज बेस्ड ऑन CPI IW, सेंट्रल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, DA डिटरमाइन करा जाए, CPI IW ने कि DA डिटरमाइन करा जाए to central and state government employees and worker in industrial sectors beside measuring inflation in retail prices। ओके, इन्फ्लेशन मेजर करा जाए, DA डिटरमाइन भी करा जाए CPI IW ने के। ठीक अछि, ओके, and CPI IW is compiled and maintained by Labor Bureau। आसी पर क्वेश्चन मन रखो। So this is the table showing difference between consumer price index and wholesale price index। okay, consumer price index की publish करे, consumer price index published by NSO, WPI by economic office of the economic advisor। okay, WPI goods only, CPI goods and services both। okay okay, and WPI prices paid by manufacturers and wholesalers because it is wholesale price index, and it is paid by consumers because it is consumer price index। okay okay, so the base year मझे मझे रिवाइज होची। ठीक अछि, ओके, तो currently it is 2011-12 and
to it is to 2012 base year is getting revised, okay, regularly. Okay. The contribution of this is very high topic, remember this, okay. The contribution of primary sector to GDP of India. This is a very good question. बहुत पिला एथरे कंफ्यूज है कि क्वेश्चन भूल करे आछंती. क्वेश्चन पचारची कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया. प्राइमरी सेक्टर माने agriculture and allied activities. Primary sector contribution GDP को if it is increasing over the years, if it is remaining same over the years, if it is decreasing or it is increasing or decreasing over the years. See, let us see the data first. Okay, see, this is 1951, 1950-51. This is 2014-15. See, 1951 रे agriculture sector contribution to economy, it was 51%, okay, and gradually it came down to 17%. 2014-15 17% है गला, ठीक अच्छे. And 2016 रे 16.36, 2017 में 16.56 बढ़ी गला, 2017 में 15.97 कमी गला, पुणी 2019 में 16.68 बढ़ी गला, 2020 रे 18.32 बढ़ी गला. माने केबे कमुची केबे बढ़ुची, ठीक अच्छे. तो जो मैंने भाविले कि धीरे धीरे ओवर द इयर्स आमर प्राइमरी सेक्टर माने एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कमी कमी आसी, सर्विस सेक्टर बढ़ी बढ़ी आसी. एटा जनरल कांसेप्ट पिलांगर थाए, बट डाटा शो समथिंग डिफरेंट. आंसर हम एट टाइम्स इंक्रीजिंग एट टाइम्स डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स. ओके, ओपीएससी प्लेड ए गेम विथ एस्पिरेंट, ठीक अच्छे. ओपीएससी प्लेड ए गेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Robin Hood effect. Robin Hood effect is related to which of the following? Income and consumption, income generation, income redistribution, income taxation. See, ए भला क्वेश्चन रेगुलरली ओपीएस रे पढुची, ठीक अछि. जो क्वेश्चन तमे बेले जान नथिबो तो गेम थ्योरी जेमति गोटे क्वेश्चन पडतला तो सेमति. तो you have to remember the basic named concept, like you can say Robin Hood effect, Kunzent's curve, Laffer's curve, Phillips curve, all these things you have to remember. So Robin Hood effect related to income redistribution. Remember this. C will be the answer. C. What is Robin Hood effect? Robin Hood effect is the redistribution of wealth from rich to poor. Rich लोक मानक पाखुर हम poor मानक पाखु को income transfer करछे, that is Robin Hood effect. Okay. The Robin Hood effect deals with redistribution. Okay. Redistribution income from rich to poor. The Robin Hood effect can be caused by a large variety of government interventions or normal economic activity. Either government rich लोक पाखरु wealth आनी कि poor मान को distribute करिवो, सेटा भी हे पारे, किंबा in the varieties of economic activities. जति जणे गोटे rich लोक किछि लोक को employment देला, ठीक अछि कि नै. जति employment देला ताले poor माने ता पाखरे employee हेले, सी तांको salary देला, तो income redistribution हैला, ठीक अछि. So it can be by the way of government intervention or it can be by the way of economic activities. Okay. Okay. Just remember this. Robin Hood effect is related to income redistribution. Again, one important question. Out of the 4 concepts of money supply used in India, M1, M2, M3 and M4, the post office savings are included in M1 only, M3, M4 only, M4 only, M2, M4 only. Very, very important question. You have to know what are the types of money. See this table. Money supply in the economy. Okay. Money supply in the economy, M1 money, M2 money, M3 money and M4 money. Okay. M1 money, the currency circulation jaha bhi economy रे अछि, plus demand deposit plus other RBI deposit. ठीक अछि. Currency plus demand deposit plus deposits with RBI. ठीक अछि. Okay. Then M2 money. M2 money होछि M1 प्लस एटा रहबा कंप्लीटली प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इन सेविंग्स बैंक्स. पोस्ट ऑफिस रे जहा सेविंग्स बैंक रे जहा अछि दैट विल बी देयर. M3 मनी एटी भूल करबनी, M2 मिसे दबनी. M3 मनी होची M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, ठीक अछि. देन M4 मनी इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक अछि. तो कोथरे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स रहला, एटा रहला, ठीक अछि. एटा रहला त माने M2 रे रहला आ M4 रहला. M2 and M4. Answer will be D. Okay. Concept जानिया को पड़िबो, ठीक अछि. It is not like that आमे गोटे
2 मास भीतर पढ़ी सब कर दवा यू हैव टू नो द कांसेप्ट you have to go through the textbooks know what is the relevance of types of money तार important MCQ कौन जेमती हम पढ़ले कि SLR CRR एक्सेस रिजर्व तार कांसेप्ट कौन के हाई टॉपिक रू कांसेप्ट हमको जानिया पड़िबा ठीक अछि नेक्स्ट दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन द IRDA Insurance Regulatory and Development Authority is which type of body? It is constitutional body, statutory body, advisory body, or non-governmental body. Okay. See, IRDA was set up in 2000. IRDA was set up in 2000. The headquarters is Hyderabad. It is a statutory body. Okay. Statutory body. Their role kona regulation and promotion of insurance and reinsurance company in India. इंडिया जेतिकी इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस कंपनी अछंती द रेगुलेशन ऑफ दोज कंपनीज एंड द रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस कंपनीज आर डेल्ट बाय IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इट इज a statutory body okay so thank you very much for your patient listening economy is very easy if you know the concepts okay so always read the standard source and get a strong hold over the important concept jano you will easily get through the preliminary okay so thank you very much